Good morning, students. Today we will continue the remaining portion of your first chapter of your book Tune In. Okay? आज हम आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ओके? स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग. इंट्रोड्यूस. वर्क इन पेयर्स. रोल प्ले दिस कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर. आपको क्या करना है कि दो लोगों को ये कॉन्वर्सेशन, एक को एज्यूम करना है कि वो टीना है, एक को एज्यूम करना है कि वो अरविंद है, और ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है. ओके, तो हम रीड करेंगे. टीना: हेलो, माय नेम इज़ टीना. अरविंद: हेलो टीना, माय नेम इज़ अरविंद. नाइस टू मीट यू. टीना: नाइस टू मीट यू टू अरविंद. ओके, तो ये है जब हम किसी से मिलते हैं, उसे ग्रीट करते हैं, तो हम इस तरह से बात करते हैं. ओके, हाउ टू गेट समवन प्रॉपरली. हाउ टू ग्रीट समवन प्रॉपरली. किसी को हमें अच्छे से ग्रीट करना है तो हम कैसे करेंगे? व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, ग्रीट देम प्रॉपरली. गिव अ वार्म स्माइल. लुक एट देम व्हेन यू स्पीक टू देम. रिपीट देयर नेम्स व्हेन यू से नाइस टू मीट यू. आप जब भी किसी से मिलते हैं पहले बार, तो उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करना चाहिए. एक अच्छी सी स्माइल के साथ उनसे बात करनी चाहिए. और जब हम उनको बोलते हैं नाइस टू मीट यू, तो उनका नाम रिपीट करना चाहिए. ओके, सो नाउ वी विल डू दिस. नाउ ग्रीट ईच अदर एंड टेल योर नेम इन द सेम वे. ओके, तो फर्स्ट होगा हेलो, माय नेम इज़, यहाँ पे जो आपका नाम है आप उसको लिख सकते हैं. Hello, my name is Priya. B. Hello, Priya. My name is Jeet. Nice to meet you. A. Nice to meet you too, Jeet. Okay? In this way we greet people. Okay? हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उनसे इस तरह से बात करते हैं. इसको मैं एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ. हेलो, मेरा नाम प्रिया है. तो जो सेकंड पर्सन होगा कहेगा हेलो प्रिया, मेरा नाम जीत है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा. फिर प्रिया क्या रिप्लाई करेगी? मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जीत. सेइंग इट राइट. ओके, नाउ सिंग. लिसन एंड सिंग अलोंग. यू हैव टू लिसन दिस एंड सिंग अलोंग. S sweet I want. T tarts and jam. P pick and tarts first. N now lick the jam. So now speak with me. S sweets I want. T tarts and jam. P pick and tarts first. N now lick the jam. Okay, very good. Now all of you will repeat all these things with me. Okay, listen and repeat the words aloud. Pay attention to the beginning sound of each word. SAT sat. TAP tap. PAT pat. NIP nip. Okay, and now we will read this way. SAT sat. SUN sun. SIX six. SIT sit. TAP tap. TIN tin. TOP top. TUB tub. PAT pat. PAN pan. PIN pin. POT pot. NIP nip. NAG nag. NET net. NUT nut. Now all of you will speak with me once more. SAT sat. SUN sun.
SIX, SIT, sit. TAP, tap. TIN, tin. TOP, top. TUB, tub. PAT, pat. PAN, pan. PIN, pin. POT, pot. NIP, nib. NAG, nag. NET, net. NUT, nut. Very good. Now short. Say these words aloud. Circle the words in each row that does not begin with the same sound. We have to circle the words which do not begin with the same sound. SAT, sat. CAT, cat. SET, set. SAP, sap. SIP, sip. So here this word do not begins with the same sound. So we will circle CAT, cat. Now coming to the next line. PAN, pan. TAN, tan. POT, pot. PIT, pit. PAT, pat. So second word do not start with the same sound. So TAN, we will circle TAN. Okay. So which word you have to circle? Cat. Now tan. Again. TAP, tap. NAP, nap. NAB, nab. NIB, nib. NUN, none. So which word we have to circle? The first word, TAP, tap. This word does not start with the same sound. Now again, TOP, top. TIP, tip. SAT, sat. TEN, ten. TAG, tag. So which word do not starts with the same sound? Yes, third one, SAT, set. Now identify. Say these words aloud. Underline the common sound in each word. You have to speak them loudly and then underline the same sound. Okay. SAT, sat. PAT, pat. NAP, nap. Which sound is the same sound? This A sound is the same sound. Okay, so underline A. Now again, next. Next one, BAT, bat. TAP, tap. MAN, man. So which sound is the same sound? Again, A. So we will underline the A. Okay. Now coming to the last. Work in group of 4. Choose a leader. The leader will point to the picture one by one. Greet your friends as per the time of the day. Take turns to greet. So now I will put the finger. How we will greet at this time? So this is the time of morning. So what do we will say? Good morning. Okay. What we will say? Good morning. Now this is the noon time. How we will identify that this is the noon time? Because the sun is on the top. So how we will greet each other? Good afternoon. Okay.
Now, which time is this? This is the time of evening. So, how we will greet? Good evening. Yes, very good. We will greet by saying good evening. This time you can see the moon here. So, this time is the evening time. So, how we will greet? By saying good night. Okay, and with how you will greet here? They are standing far from each other, so they will say each other goodbye. What will they will say? Goodbye. Yes, very good. Okay students, in this way we have completed our first chapter. Hope you have understood. If you have any problem, you can ask me. Have a good day.